Well, it is in fact a special edition of the Delhi Cabinet on NDTV, and today we have with us the Home Minister, the Education Minister, the Power Minister, and also the Urban Development Minister, Ashish Sood, with us. Thank you, sir, for taking out the time for speaking to NDTV. First of all, sir, my first question, your journey as an opposition leader to now a minister in power, how has it been so far? I don't see it as an opposition leader to a minister. We have been working for the interests, for the issues of people of Delhi. It was an irony that we were in opposition for a long time, but we were working hard for the interest of the people of Delhi. And at last, people of Delhi have believed in what Modi ji has promised. And now we are in government and we have to deliver all the promises which Modi ji have made to the people of Delhi. So recently you've had a very crucial meeting with the Home Minister. After that, sir, on law and order situation, after that, sir, what special is for the 100-day of plan for the Home Department of Delhi? Look, after many years, previous government was not in line with the central government for their own political motives. They wanted to have a kind of a fight with the central government to divert the attention from the from their failures, so that they were always in a kind of a conflict position with the central government, so as to prove that we are there to work and central government is not. It was a strategy adopted by them. We are the State Home Ministry is a coordination agency with the central government. We, in coordination with central government, will work for the improvement in jails, in the improvement in the prosecution, and improvement in the with the involvement of the office of the DM to improve the law and order situation of the people of the city. And this meeting was basically focused on these issues only. Sir, I want to ask you, you talked about the, the condition of the jails. We have seen that earlier also. The Delhi High Court has also pulled up the Tihar, prison authorities for not having even the basic amenities. For that, sir, what is the roadmap that you have prepared so far? No, we are visiting all the aspects of the jail administration. The jail minister itself was busy having massage from a POSCO accused in the jail. The focus by the previous government was not about the safety, security of the people of Delhi. It was basically the state government previously was focused in creating a conflict-like situation, which I have earlier mentioned. So they never did this. So as to pass a buck and say that central government is not doing this. The era has changed now. We are concerned about the law and order situation, the high risk inmates of the jail and all those things. We are concerned about these issues. We are basically, being a union territory, we are basically a administrative office of various agencies working in Delhi, the Home Department of Delhi. So in coordination, in the guidance of the Central Home Ministry and the Central Home Minister, respected Amit Shah ji, we will be taking these issues forward. Wait for some time. We have just taken over for not more than 15 days. So Rohingyas have been a big issue. You have been, conducting drives as well. We just want to understand from you that, when you were campaigning, you had said that, you'll be conducting the drives that are going on. But what's the further roadmap, sir? Don't you think the Rohingyas, the infiltrators from Bangladesh, the illegal infiltrators from Bangladesh should go out from the country? Don't you feel so? As a concerned citizen, everybody feels so. Those who want to use them as a vote bank are interested in their being settled here. We will be taking all precautions to watch out
that all Rohingyas and other infiltrators are deported. Number one. Moreover, we are more concerned about the overground support being provided to these Rohingyas and other people. So, to me, what it appears is, even if one infiltrator is not caught, I'm okay with it. But I'm not okay with even one person who was providing overground support to forge them these documents. He or she was a part of the Deshdroh in this activity. Those overground supporters should not be spared. This is our main concern. So, as a power minister, we are seeing that you're already in action. You have held meeting. You've given the directions for the summer action plan to be implemented. So, we can expect as Delhites that this time there will be no power cut. We are working hard on that. Previous government was not very serious. They have not spent much on the infrastructure. In this very little time, we will not be able to do much about the infrastructure. We are concerned about that. We have taken stock of all power purchase agreements, all preparedness, availability of stocks, spares, the movement of spares in case of eventuality, if the peak comes early and all. We are working on that. So, hopefully. Power discoms also? Yes, one who doesn't perform will have to pay. Thank you. So my last question to you is, you're also the education minister. You've made the promise of free education from KG to PG. So what's the roadmap there? When will it start? Already from KG to 12th, Delhi government is giving the education. We will be looking into that aspect. And beyond that, give us some time. Let us prepare our budget. And we have to set our priorities right. Look, our Sankalp Patra had many promises. We will prioritize, the cabinet will prioritize which issue has to be handled before, first, and how to go about it. Give us some time. Thank you, sir. So this was, in fact, the Cabinet Minister Ashish Sood speaking to us, NDTV. And, this was the special segment, the very first interview. Now, with camera person Sanjay Kaushik, this is Ishka Verma for NDTV. Well, this is the segment of the Delhi Cabinet on NDTV, and today joining us is, in fact, the Cabinet Minister, Manjinder Singh Sirsa. Thank you so much, sir, for joining us on NDTV. My first question to you is, so you've got a very challenging portfolio, the environment portfolio. We have seen that, in the last year also, previous years, we have seen how pollution has been a quite life-threatening situation for the people here. What's your roadmap, sir? So definitely it's a very important issue for the lives of Delhi. So three important things which we need to handle is, one is pollution from vehicle pollution, construction pollution, and a road dust pollution. And along with that is a industrial pollution also. So we are focused on three things. One, that we want that there should be no fuel pollution. There should be clean fuel, and especially the Bharat stage 6 vehicles should be permitted, and we should enforce that the stringent laws, which laws are there, they should be followed up. And secondly, as far the road pollution is, the government has given directions to the PWD and MCD also to cover all that area which is a brown area, which creates a dust there. We are also trying to implement that all PWD roads should be mechanically swept, not by because it creates a dust particles. So, and same is with the water pollution also. The day I joined this office, we have been continuously in process of creating new parameters also and enforcing the existing laws also.
and at the same time what best could be done, and our focus will be in coming days to handle the pollution where the pollution it has been created. So if some organization creates X number of pollution, it should be handled there itself. So that will be our goal in coming days. So you spoke about the vehicular pollution. We have also seen that you've said that after April 1st, those vehicles, which are over 15 years, they won't be giving, petrol also. But sir, we have seen that in the last government also, the awareness was very less. And people only used to know when they used to reach the petrol pump. So sir, for increasing the awareness, what steps will be taken this time? So yesterday in the meeting with our Honorable Chief Minister, the various initiatives were decided to be taken. As you said very well, that people are not aware. So the awareness initiatives will also be taken. The law of 10-year-old vehicle and 15-year-old vehicle is decided by the Honorable Supreme Court, and as per the guidelines of the Honorable Supreme Court, no vehicle can ply in Delhi which is 10-year-old of diesel and 15-year-old petrol. So from last couple of years, the governments have been trying to enforce this. Though I must say that the government had at least reached a place where people are now well aware that their vehicle is creating a pollution. Though they want to ease out it or not, that's up to them, but they are now well aware. And I would also request that as a citizen of this Delhi, we should all abide by the rules which have been already enforced. So if we'll follow by that, then definitely the life of everybody will be better here. So, एक सवाल मेरा इस पे भी है that if you talk about the construction sites, since whenever the pollution increases, the pollution from there also increases, and the DPCC, they issue the fine. But even after that, we have seen that these sites, they continue to violate the rules. So, any stringent action that will be taken this time for the violators? No, definitely not this time. Every time it should be taken because it's a life-threatening. The small children are unable to have a good clean air. The aged people are even in a big problem. So the construction should be immediately stopped. And also the guidelines which are framed by the MCD, it has to be strictly followed, that how construction should go, how it should be covered, how water sprinklers should be there. So whatever the existing laws, there has to be strictly enforced on them. So my last two questions for you. Number one, sir, firecracker ban. We have seen that it has been a big, rather political issue also, because there are, when the BJP was in opposition, they were saying that firecrackers don't actually create that much of pollution. Now, the previous government that was there, they said in the Supreme Court that they will be implementing an all-year ban on firecrackers. So what will be this time, the roadmap over that? Will you be also continuing with that all-year? So if there are some Supreme Court orders or rulings from Supreme Court, it has to be enforced. But if you ask me personally, I feel that as a religious person, I also believe that in some occasions, it's not 365 days, but yes, when there is a tradition which has been carried from since years and years. I personally believe when you are doing so much of construction, doing everything over there, it should be also allowed, but with a strict dimensions of that pollution, that those crackers which have a zero pollution, that should be allowed, because the traditions and the religion should be also taken care of. So my last question to you is, you also have forest department under you. We have seen that, previously the Supreme Court, the courts in fact had pulled up with the government saying that, they are not in fact serious about the afforestation here. So this time regarding the afforestation also, what is the action plan ahead, sir? So we have planned yesterday only in the meeting. This year also we'll try to increase from what couple, because I don't want to blame anybody, but the last governments were not serious on these issues. They always believe कि वोटें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से वोटें नहीं मिलने वाली. The person who said कि यमुना जी के साफ करने से वोटें नहीं मिलती. So now you can very well understand his thought process. So it is not about the votes. It's not about the politics. It's about how coming generations will be able to live here in Delhi. They should live with a clean air. That is our focus. So we'll go do this also.
So, पिछली सरकार ने ये भी कहा था कि ये एक दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है पोल्यूशन का, दिस इज एंटायर नॉर्थ इंडिया, एंड दे वर ऑल्सो सेइंग दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट सीरियस, जॉइंट मीटिंग्स नहीं हो रही हैं उसके ऊपर से। नाउ दैट यू आर द एनवायरनमेंट मिनिस्टर, व्हाट डू यू हैव टू से? नहीं, देखिए, वो तो जो भी उनको तो ब्लेम ही करना आता था। अरविंद केजरीवाल जी को स्वाय ब्लेम करने के 10 साल उन्होंने क्या किया, इसलिए तो लोगों ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। वरना देखिए, कभी कोई पार्टी का प्रेसिडेंट थोड़ा हारता है, ठीक है, चुनाव हारना जितना अलग बात होती है। दूसरा, अब आप बताइए, आप कह रहे हैं सीरियस नहीं है, अभी अरविंद केजरीवाल जी का पता ही नहीं वो है कहाँ पे। अब वो कहते हैं सीरियसनेस तो उनकी यहाँ से पता चलती है, कोई विपासना पे गए हैं। विपासना क्या है? शांति, समृद्धि। वो शांति लेने गए हैं, उसमें भी 50 गाड़ियों का काफिला सायरन बजाता गया है, उसमें भी 150-200 गनमैन साथ में गए हैं। अब देखिए, ये शांति लेने का उनका तरीका है, तो वो कहाँ सीरियस, वो कैसे इस आदमी को हम सीरियस कैसे मान लें? So, in fact, this was the Cabinet Minister Manjinder Singh Sirsa speaking to us on NDTV. Now, with camera person Sanjay Kaushik, this is Ishka Verma for NDTV. Well, joining us right now is in fact the Health Minister in the Delhi government, Dr. Pankaj Singh with us. Sir, welcome to NDTV. मेरा पहला सवाल ये है सर कि आपके अंडर में 2 मिनिस्ट्रीज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। अगर हम 100-day स्पेशल प्लान की बात करें तो दिल्ली वासी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, खासकर हेल्थ मिनिस्ट्रीज? फर्स्ट आई वांट टू करेक्ट यू कि मेरे अंडर में मेरे पास 3 मंत्रालय हैं। फर्स्ट इज हेल्थ, सेकंड इज ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड इज आईटी। अब आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? सर, वी वर आस्किंग कि अगर हम बात करें 100 डेज की, तो 100 डेज में क्या स्पेशल होने वाला है हेल्थ मिनिस्ट्री के? देखिए, आप ये समझिए कि दिल्ली की जो हालात है, दिल्ली में ना प्राइमरी हेल्थ की सुविधा है, दिल्ली में जच्चा बच्चा केंद्र के नाम पे कुछ नहीं है, दिल्ली में वैक्सीनेशन के नाम पे आपके पास रेबीज, हेमोफीलिया के नाम पे इंजेक्शंस नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई है, हमने उस सब चीज़ों के ऊपर आकलन किया है। हॉस्पिटल्स के ऊपर, हॉस्पिटल को क्या सुविधा चाहिए जिससे वो अपनी बेटर सुविधाएं डॉक्टर्स दे सकें, डॉक्टर्स की क्या प्रॉब्लम्स है उनकी बात सुनी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और उनके डॉक्टर्स इतने इफ़िशिएंट, इतने अच्छे हैं कि वो दिल्ली की जनता को एक बेटर सुविधा दे पाएँ। उस सब की चर्चा की है। और जो 100 डेज का प्लान है, मैं ये कहूँ कि 100 डे में दिल्ली बदल जाएगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। दिल्ली बदलती हुई आपको दिखेगी। दिल्ली बदलती हुई दिखेगी जो प्राथमिक उपचार कहते हैं, प्राइमरी, उसमें सुधार आएगा। जच्चा बच्चा केंद्र के नाम पे जो पिछली सरकार ने कुछ भी नहीं किया, उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। हॉस्पिटल में ओपीडीज में जो दवाइयों का मारामारी है, दवाइयों में जो डुप्लीकेसी है, जो कैग की रिपोर्ट कहती है कि एक्सपायरी दवाएं पड़ी हुई हैं, उन सबको क्लियर करेंगे। होल एंड सोल में अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपको 100 दिन के अंदर, जैसे हमारा कैंसर हॉस्पिटल है, हमारा एलएनजेपी, हमारा जीबी पंत है, इतने अच्छे से हॉस्पिटल, इसके बारे में मैं लाइन से गिनना चालू करूंगा तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। उन सब में आपको एक काम करने का तरीका, डॉक्टरों की सोच में बदलाव, डॉक्टर्स का लगन आपको दिखेगा काम करने के लिए। सर, अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने देखा है कि सीएजी रिपोर्ट जो है वो टेबल हुई है, मोहल्ला क्लिनिक्स की खासकर बात करें तो उनमें काफ़ी सारे जो हैं इनएफिशिएंसी, इरेगुलरिटीज़ जो थी वो सामने आई है। तो मोहल्ला क्लिनिक्स को लेके खासकर क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, मेरी पहली बात मैं आपको बताऊँ, टोटल दिल्ली के अंदर 520 लगभग मोहल्ला क्लिनिक है और इस लोकतंत्र में चौथा अगर स्तंभ माना जाता है तो मीडिया को माना जाता है। मुझे आप बताइए 20 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक जो चलते हुए हालात में हैं, उसमें से लगभग 190 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जो रेंटल्स हैं, जिसमें ना दवाई है, ना डॉक्टर, ना कुछ है। वो सिर्फ एक आई वॉश करने के लिए और पैसों का जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान करने का कारण है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बगल में घर है 4000 का, उसके बगल में एक मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जगह ली गई जिसको 20 से 25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं महीने किराए के, और ना वहाँ डॉक्टर है, क्योंकि वो वहाँ के विधायक का, सो कॉल्ड विधायक जो हुआ करते थे, उनके आदमी हुआ करते थे जहाँ रेवेन्यू के नाम पे है।
मेरे प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता को जो विश्वास दिलाया था, जो कहा था कि मैं आपको विश्वास देता हूं कि दिल्ली में बदलाव आएगा। हम व्हाट इज आयुष्मान, आयुष्मान को पढ़ने का तरीके में आपको 4 लाइनें में आयुष्मान को मैं बताना चाहूँगा। प्राइमरी, सेकेंडरी एडमिशन वाला, थर्ड व्हाट इज थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, चौथा उनको एक लिस्ट आउट में रखना कि कभी भी इन फ्यूचर में कोई समस्या हो तो क्लिक करें और उस पेशेंट के बारे में कहीं जाके इलाज करा ले, उसकी बीमारी के बारे में जानकारी रहे। मोहल्ला क्लिनिक टोटली फेल है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को ठगाया। सिर्फ फ्रॉड बिल बने हैं, फ्रॉड काम हुए हैं जो कैग भी कहती है कि हम डे केयरिंग, जैसे जो औषधालय डे केयरिंग वाली बात, हम डे केयरिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका पायलट प्रोजेक्ट भी बन चुका है। लगभग 28 पायलट प्रोजेक्ट अगले महीने आपके बीच में, दिल्ली के बीच में मिलेंगे, जिसमें प्राथमिक उपचार विद प्राइमरी के साथ, मतलब आप उसको जैसे बीमार होकर एक पेशेंट आया तो एटलीस्ट वो एडमिट हो जाए, उसका इलाज हो जाए, शाम को डिस्चार्ज हो जाए, वो सुविधाओं के साथ लाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में मैं आपसे बोलूं कि वो अगर सिर्फ करप्शन का अड्डा था तो उसमें कहीं दो राय नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि वो करप्शन का अड्डा था, आई वॉश था, फ्रॉड था, तो क्या हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे कार्रवाई भी की जाएगी और वो बंद भी हो सकते हैं? मैंने आपसे पहले भी बोला था और चैनल के माध्यम से भी बोला है कि एक एक आदमी जो इसमें इन्वॉल्व था उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और कैग की रिपोर्ट जब मैंने सदन में पटल पे पेश की थी तो इस बात को मैंने उस समय सदन में भी कहा था, आपके चैनल के माध्यम से भी कहा था कि जो जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कल परसों आतिशी ने बोला कि जी बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद करा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, आतिशी जी को ले चलिए और मुझे 20 मोहल्ला क्लिनिक ऐसा दिखा दीजिए जो चलते हालात में है, जहाँ पे लोग को सुविधाएं मिल रही हैं, लोग को दवाई मिल रही है, डॉक्टर्स मिल रही है। मैं 20 की बात कर रहा हूँ, 520 में से। तो मोहल्ला क्लिनिक तो एक अपने आप में स्कैम का अड्डा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो क्या आप बंद करेंगे सर, जो सवाल है? मेरा मुद्दा मैं आपको फिर बताऊं, बंद तो होगा ही होगा। बंद के साथ हम आपके बीच में प्रधानमंत्री जी का जो सोच और सपना था उसको पूरा करके जमीन पे आपके बीच में लाएंगे। हम औषधालय बनाएंगे जिसकी प्राइमरी सुविधा रहेगी और बड़े अच्छे रूप में आपको ये दिखेगा 100 दिन के अंदर कि दिल्ली का हेल्थ व्यवस्था कैसे सुधरती की ओर है, सुधारने की ओर है, ये आपको दिखेगा। सर, आयुष्मान योजना का सिर्फ MOU साइनिंग अगर हम बात करें तो वो बाकी रह गया है, वो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से साइन करके केंद्र को भेज दी है। 17 को हमारी मीटिंग है, उसके ऊपर हम, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। हम आपको लोकेशन बता देंगे। हम और डिफरेंट RW के लोग को भी बुला रहे हैं, NGOs को भी बुलाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से आयुष्मान के लोग आ रहे हैं और 18-19 को हमारा MOU साइन हो जाएगा। सर, आपके अंडर में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की तो DTC की जो CNG बसेस हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, करीबन 1000 ऐसी बसेस हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल ख़त्म होने वाला है। लोगों को परेशानी हो सकती है, क्या सोचा गया है? पहली बात कि DTC की 1000 बसें कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। DTC की अपनी 500 बसें हैं और लगभग 390 और 400 बसें हमने कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी बसें थी, जिसका कार्यकाल 31 मार्च के बाद बैक टू बैक पूरा होता जाएगा। एक साथ नहीं खत्म हो रही, बैक टू बैक पूरा होता जाएगा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक बसें हमारी बहुत जल्दी दिल्ली में आ जाएंगी और जैसे जैसे CNG बसें बंद होती जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें आती जाएंगी। अगले महीने फर्स्ट वीक में इलेक्ट्रिक बसें कम से कम 400 से 500 दिल्ली की रोडों पे रहेंगी। सर, EV पॉलिसी की बात करें तो आप लगातार रिव्यू मीटिंग्स कर रहे हैं EV पॉलिसी को लेके, दिल्ली वासी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं EV पॉलिसी? देखिए, EV पॉलिसी के ऊपर अभी कहना थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि EV पॉलिसी जो चल रहा था जो 31 मार्च को बंद होगा। हम EV 2.0 के ऊपर सोच रहे हैं, उसके प्लस माइनस के टेक्निकल एक बार देख रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है दिल्ली स्वच्छ मुक्त, दिल्ली पॉल्यूशन से फ्री रहे, दिल्ली में जो लोग सांस लें वो अच्छे से लें।
उसके लिए ये सब एक पॉलिसीज़ के मैटर तहत हो रहा है और साथ साथ में डीटीसी के रेवेन्यू को भी जनरेट करें। ये एक पॉलिसी मेकिंग हो रहा है जिसका डिसीजन कल या तो परसों तक हो जाएगा, वो मैं सब आपका बताऊंगा, परसों हम उससे मिलिएगा। ईवी पॉलिसी को हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उसके गाइडलाइंस क्या होंगे वो मैं परसों आपको बताऊंगा। सर मेरा बस आखिरी सवाल ये है कि फ्री बसेस जो थी महिलाओं के लिए, वो लगातार आम आदमी पार्टी ये इल्ज़ाम लगाते आई है कि वो बंद हो जाएंगी। बीजेपी की जो सरकार आ गई है उस पर हम जानना चाहते हैं एक ऑफिशियल आंसर। देखिए, फ्री बसें चलेंगी, भ्रष्ट मुक्त फ्री बसें चलेंगी। जो भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने कर रखा था, जो मैं आपको डाटा के साथ दे सकता हूँ और कैग भी उस रिपोर्ट को देगा बाद में, जो भ्रष्ट था काम था वो नहीं होगा। बसें फ्री हमारी बहनों के लिए चलेंगी, हमारी माताओं के लिए चलेगी, वो बस फ्री चलती रहेंगी और अच्छे रूप में चलती रहेंगी। आप मुझे बताइए किस बस स्टैंड पे, द्वारका से लेकर अभी मेरे घर नागौली के बीच में कितने बस स्टैंड आपको दिखे जहाँ पे हमारी माता बहनें खड़ी हो सकती हैं? ना इन्होंने बस स्टैंड बनाए, ना इन्होंने कुछ किया, सिर्फ बातें बनाई हैं। बसें फ्री रहेंगी, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बोला है, हमारी सांसद जी ने भी बोला है। बसें महिलाओं के लिए पूरी तरह से फ्री और अच्छी बसें अच्छी सुविधाओं के साथ दिल्ली की माता बहनों के लिए रहेंगी। So this was in fact the Health Minister Dr. Pankaj Singh speaking to us on NDTV. This is Ishka Verma with camera person Arun Negi for NDTV.